So, hello and welcome to all of you. Good morning, everyone. Uh, my name is Aditi Bhatt, and I'll be taking your session on daily legal current affairs, wherein we will be analyzing today's the Hindu newspaper, right? So, let's start with the session. So before I proceed further, let me introduce you to the Telegram link and the barcode. So you can, for regular class updates, you can join my Telegram channel by scanning the code here, or you can also join with the help of the Telegram link. I share the regular class updates over there, as well as the PDF of the Hindu newspapers for those students who do not have subscription to to the Hindu newspaper. So I share it to all of them so that the students can actually read the newspaper and refer to it while attending the sessions. Okay. And also, if you're planning to take on any of the subscriptions from the Unacademy platform, then to unlock free classes and subscription discounts, you can use the referral code ABCLAT. Okay. All right. So let's start with today's discussion. These are some of the highlights from today's newspaper. First news item covers bail orders should not be too long or come too late as both violate personal liberty. This has been stated in the recent judgment by the Supreme Court. Okay. The next news item states 9 have been arrested for lynching Bihar worker in Kerala. Okay. Then third, for delivery agents, government's EV push brings burden of transition. Fourth is this strategic economic bloc will only tighten the leash, IPEF. All right, and so we look into that economic bloc, right? And the fifth or the last one is the nutritional value of millets. All right, okay, so let's proceed further. Okay, so the first news item here, the first news item is bail orders should not be too long or come too late as both violate personal liberty. This has been said by the Supreme Court. The Supreme Court has held that orders of courts in bail cases should neither be too long and elaborate nor come too late as both violate the constitutional mandate of personal liberty. Okay, this was said in the recent judgment by Justice B.R. Gavai and Justice Sanjay Karol. Right? While rejecting or granting bail to accused persons should not slip into extensive deliberations on the merits of the case or evidence involved. Okay. So we need to first understand what is bail. Okay, you see, bail is okay, let me just first clarify that CLAT consortium website. When you go on to the CLAT consortium website, you will not see any when you read the syllabus on the website, you will not see any clarity as to what the syllabus is with respect to legal reasoning. Okay, they have written that contemporary legal developments or the whatever is the core understanding, they are basically trying to assess your reading skills and your comprehensive skills and whether you are able to apply the fundamental core conceptual clarity to the facts of the matter or not. So they are basically assessing your legal aptitude, right? And to develop legal aptitude, they have not really specified what subjects to cover, right? What all subjects or which particular statutes to cover, which acts to cover. So the syllabus is then prepared by whoever is teaching, whoever are the mentors. Then they prepare the syllabus on the basis of whatever has been asked on the previous year's question papers. So if we analyze the previous year question papers and when we look at criminal law, then only Indian penal code has been referred to or has been questioned. So questions have been asked from IPC, right? They've not been asked from CRPC or evidence, right? But when we talk about criminal law, then criminal law actually covers the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, and the Indian Evidence Act, right? So a basic understanding of what the other two laws say or what are some concepts, right? Because these are not straight jacketed laws. They are all they have inter connectivity. So this is the entire criminal law.
So the three laws that I'm talking about, the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, and Indian Evidence Act, all three together comprise of what the Indian criminal law means. That okay. So understanding some basic concepts from other laws as well, like CRPC and Indian Evidence Act, also helps in developing the overall understanding. Okay, the overall conceptual clarity. ठीक है. So we will now look at what bail is. Bail जो concept है वो CRPC का concept है. You will be taught that in the law school, but you need to understand what bail is, just so you have some conceptual clarity of what the news item is referring to. ठीक है. All right. So bail, I'm not going to refer the different sections of CRPC or even IPC because that's not relevant. You don't need to remember the section. I'm reiterating it again. Okay. Now, bail is a legal document. So, bail is a legal agreement between an accused and the court in which the accused pays a sum of money as an assurance that he or she will appear in the court. So, a legal agreement between an accused and the court in which the accused pays a sum of money as an assurance that he will appear in the court. Right? Bail is basically a temporary release. Okay. So the accused can be released temporarily on payment of bail. Payment of the bail amount. Right? Okay. So this is what the concept of bail is. Okay. So there was a Supreme Court judgment which stated that bail continues to be understood as a right for assertion of freedom. It is a right for assertion of freedom, that is asserting right for asserting freedom, right? Assertion of freedom against the state imposing restraints. Against the state imposing restraints. Now see, bail is not a fundamental right, right? Even though article under, if you see under article 22, you have some, the rights of the accused, the rights of the persons who are in jail, prisoners have been mentioned under article 22. Okay, so those are fundamental right. Bail per se is not a fundamental right. It is a statutory right, and it is as per the offense. अगर कोई let's say offense है जो कि bailable है, ठीक है, when you will go to the law school और जब आपको laws पढ़ाए जाएंगे, you will see CRPC में there is an entire schedule. ठीक है, उस शेड्यूल में मेंशनड है कौन से केसेस या कौन से ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें बेल मिल सकती है, यानी कि वो ऑफेंसेस बेलेबल हैं कि उसमें आप पेमेंट एक बेल अमाउंट पे करके यू कैन क्लेम और यू कैन आस्क फॉर बेल, यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम अ बेल. ठीक है.
एंड कौन से ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि नॉन बेलेबल हैं, यानी कि उन ऑफेंसेस में बेल नहीं मिल सकती, राइट? ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल, बट सो बेल actually is a statutory right of citizens. Okay, and it depends if, and bail is only applicable if the offense that has been committed is bailable. All right. So bail is a right for assertion, or a statutory right for assertion of freedom against the state imposing restraints, right? और ये जो आइडिया है ये कहाँ से डेवलप हुआ? So UDHR, which stands for UDHR 1948, which stands for Universal Declaration of Human Rights, ठीक है? They recognized the idea of bail, and India is of course a signatory. The concept of bail has found a place within the scope of human rights. So the concept of bail, that is, it is also considered as a human right, ठीक है? So bail, according to dictionary meaning, denotes security for appearance of a prisoner for his release. Bail may thus be regarded as a mechanism whereby the state devolves upon the community the functioning of securing the presence of the prisoners, and at the same time involves the participation of the community in the administration of justice. ठीक है? अच्छा, उसके बाद कई सारे सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छे जजमेंट्स दिए हैं पहले, and of course even now the Supreme Court continues to do so. So the Supreme Court has given earlier very pro liberty and pro citizen judgment. Okay. uh, in the years, especially in the years after emergency, the courts took very liberal view with regard to human rights, क्योंकि emergency जब impose हुई थी इंडिया पे, जब इंडिया में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस समय बहुत लोगों के ह्यूमन राइट्स पे इफेक्ट हुआ था, एंड द फ्रीडम एंड लिबर्टी वर curtailed. Okay. And even though they were not within the ambit of reasonable restrictions, even then they were curtailed. And so a lot of constitution, lot of provisions of the constitutions were violated. तो emergency के time पे constitution का violation बहुत हुआ था, और लोगों के constitutional और legal rights, statutory rights पे बहुत effect पड़ा था. उसके बाद judiciary ने अपना stance थोड़ा change कर लिया. It became much more I would say independent, right? Which it was not earlier, or maybe comparatively. Okay. So then of course Supreme Court gave a very pro liberty, pro citizen judgment, and in the early 90s, especially to 1997 का एक judgment है. 1997 का एक judgment है, very important. DK Basu versus State of West Bengal. तो क्या होता था, लॉट ऑफ टाइम्स अंडर ट्रायल prisoners, और इवन जैसे अरेस्टेड पर्सन्स स्पेंडिंग मोर टाइम बिहाइंड द बार्स विदाउट गेटिंग बेल्स. तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती थी कि लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था, और वो लोग उनका केस अब चल रहा है, बट दे आर नॉट इवन गेटिंग बेल. तो बहुत टाइम ऐसी चीजें होती थी, दे आर बिहाइंड द बार्स विदाउट गेटिंग द बेल. तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था that it is the worst violation of human rights taking place during investigations. Yet, even while giving directions to safeguard individuals from the abuse of authority, the court paradoxically held that freedom of an individual must yield to the needs of state security. Right? It also, so basically, in this case, Supreme Court also stated that bail is rule, bail is the rule, and jail is exception. Jail is an exception. ठीक है? सो बेल मिलना जरूरी है, स्पेशली केसेस में. अगर आप केसेस के फैक्ट्स, कई बार ऐसा भी हुआ है कि ऑफेंस जो कमिट हुआ था वो नॉन बेलेबल था,
बट कोई एजेड है, लेट्स से बहुत टाइम से, बिकॉज यू सी इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में टाइम लगता है कि कोई भी केस को पूरी तरह से डिसीजन आने में, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द ट्रायल स्टेज टू स्टार्ट एंड द फाइनल डिसीजन टू कम. ठीक है, बिकॉज देयर सो मच ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस, सो बिकॉज इट टेक्स so much of time, it sometimes, the average pendency in our Indian justice system is 11 years. So 11 years is the average time period जो कि एक केस को सॉल्व होने में लग सकता है. Of course now we have fast track courts and several other things, but जस्ट इन जनरल. सो क्या होता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनको बेल नहीं मिलती होती है, तो उस टाइम पे दिस वायलेशन ऑफ राइट्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि बेल शुड बी गिवन, स्पेशली इन केसेस जब भी कोई एजेड है या समवन हु इज इनफर्म और समवन हु इज सिक, तो राइट, हेल्थ कंडीशंस के उस पे बेसिस पे बेल इज सपोज टू बी ग्रांटेड, right, on humane grounds. So this is what is and this case, this judgment, or this news item also talks about the importance of giving bail orders. और बेल ऑर्डर्स में इस केस, इस न्यूज आइटम में बोल रहे हैं कि बेल ऑर्डर्स को वाइल रिजेक्टिंग और ग्रांटिंग बेल, जब भी बेल को या तो रिजेक्ट किया जा रहा है या ग्रांट किया जा रहा है, उस टाइम पे जो parties है, they should not slip into extensive deliberations of the merits of the case or evidence involved. तो उनको बहुत ज्यादा उस समय merits पे बात नहीं करनी चाहिए या बहुत ज्यादा evidence के पीछे नहीं भागना चाहिए when you're granting bail. So bail should be given as a rule and should not be treated as an exception. This is what the court has basically pointed out. ठीक है? Okay. Now this okay, now we'll move on to the next news item. The next news item is 9 have been arrested for lynching Bihar worker in Kerala. So let's understand what is mob lynching. With this can be also viewed from this also article can be viewed from both constitutional point of view as well as criminal, right? And also this from both constitutional as well as criminal. So mob lynching kya hota hai? What is mob lynching or lynching? So that's is a term used to describe acts of targeted violence. Term used to describe the acts of targeted violence by a large group of people. The violence is tantamount to offenses against human body, and violence basically leads to offenses. It comes under offenses against human body under IPC, and or property. So property also, offenses against property, because right, and it can be considered as both private as well as public harm. And उसमें क्या होता है कि so mob lynching basically is a term used to describe the acts of targeted violence by a large group of people, offenses against human body and property, which constitutes जो action होता है उनका, it constitutes an offense against human body and or property. It can be both human body and property, or it can be only property or only human body. ठीक है? And this particular act of mob lynching is both a private harm as well as public harm. ठीक है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को हार्म करना नहीं है, दिस इज ऑल्सो पब्लिक हार्म. ठीक है, बिकॉज मॉब एंड उसमें बेसिकली जो मॉब होती है, जो लोग हैं, लेट्स से लोग गैदर हो गए हैं एंड ठीक है, अब तो उस मॉब को लगने लगता है कि दे आर पनिशिंग द विक्टिम फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो दैट मॉब हैज अ सर्टेन माइंडसेट, राइट, and they think that they are punishing the victim for doing something wrong, but it is not necessarily illegal. तो उनको ये लगता है, they believe that whatever they are doing is not illegal. ठीक है, this is what they believe.
But they try to take law in their own hands to punish the culprit or whatever that person has done, right? And they do not, that is the basically wherein the rule of law is not followed. So rule of law is, or they'll say, you can say absence of rule of law or violation of rule of law. ठीक है? तो कई सारे रीजंस होते हैं मॉब लिंचिंग होने के, जैसे इंटॉलरेंस होता है, कभी कभी लोग दे आर, फॉर एग्जांपल मोरालिटी या इमोरालिटी, क्या चीज मॉरल है, क्या चीज इमोरल है, ऐसी चीजें टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, राइट? तो कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ, बिकॉज इट इज वेरी सब्जेक्टिव, हर पर्सन की इनफैक्ट मोरालिटी डिफरेंशिएट करती है, ठीक है? तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर, उससे बायसेस क्रिएट होते हैं, उससे प्रेजुडिसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है? कई सारे आइडेंटिटीज की वजह से भी मॉब लिंचिंग टेक्स प्लेस, लाइक कास्ट आइडेंटिटी, रिलीजियस और क्लास आइडेंटिटी, हेट क्राइम्स, बहुत सारी चीजें। एंड देन कई बार ऐसा होता है कि इनफैक्ट दिस इज हैपेंड कि बिकॉज देर इज लैक ऑफ स्पीडी जस्टिस इन इंडिया, ठीक है? कई बार ऐसा होता है क्रिमिनल केस चल रहा है एंड द पर्सन, लेट्स से रेप केस, ठीक है? और वो पर्सन भी हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन, सो ही इज coming out on bail or something of that sort, if let's say is happening. So उस case में भी there is, if there is anger and aggression in the mob, they can also because there is lack of speedy justice कि उन लोगों को justice नहीं मिली है, so they can also take law in their own hands, which has happened. And और ये मॉब लिंचिंग वाली जो चीजें, ये इसलिए भी होती है बिकॉज समटाइम्स देयर इज द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज इनइफेक्टिव, लॉ एंड ऑर्डर जहाँ नहीं है, जहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, एंड inefficiency and on part of the state government or the state ministry of home affairs. So in that case ऐसी चीजें, ऐसे incidents होते हैं, right? So honor killing हो गया, then suspicion or any kind of theft case or any kind of right, this was a laborer in Bihar. 9 persons have been arrested in connection with lynching of a laborer from Bihar, right, in Kerala. And the Kerala police says on Sunday that it was a case of murder and post-mortem of Rajesh Mandi. So murder हुआ है because वो mob lynching ऐसा हुआ कि the person succumbed to death, जिसको 9 लोगों ने मिल के मारा, be it by sticks or just by hand or legs, just doesn't matter कि आपने क्या use किया है. It only matters is in ऐसे incidents में कि the person has succumbed to death or not. So it will be murder because that person succumbed to death. और जो लोग मार रहे थे, they had the knowledge and the intention, and they had the knowledge that the act that they are doing would likely result in the death of the person. So it was बहुत सारी चीजें थी. तो he was employed, the person who was employed at the chicken farm, ठीक है, revealed that he was attacked by blunt objects, wooden sticks, plastic pipes, ठीक है, and he died of multiple injuries, internal injuries, ठीक है, whatever was the case. So the 9 arrested men from this include siblings of Muhammad Afsal, Fasil, Sharafuddin, so on and so forth. So basically this right, ओके, सो ये सारी चीजें हैं. नाउ आईपीसी में अब जैसे यहाँ पे लिखा है 9 arrested फॉर लिंचिंग, 9 नंबर है, और हमने उसको बिकॉज वी हैव कैटेगराइज एज मॉब लिंचिंग, ठीक है? हम लोगों ने पढ़ा है, राइट, कि बिकॉज दिस वॉज क्लियर केस, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि व्हाट इज एन अनलॉफुल असेंबली. अनलॉफुल असेंबली में 5 लोग होते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोग होते हैं, राइट? राइट में भी, राइट इज बेसिकली अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस. अफ्रे, अफ्रे में 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं. बट ये सब सिर्फ एक पर्सन को टारगेट नहीं करते हैं, ठीक? मतलब ये सारे जो ऑफेंसेस हो गए, ये एक को टारगेट नहीं करते हैं, ये मतलब मल्टीपल, मतलब बहुत सारा वायलेंस, सब लोग कुछ ना कुछ वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, या लड़ाइयाँ हो रही हैं. फ्रेम में जैसे 2 लोग या 2 से ज्यादा लोगों में या 5 से कम लोगों में जैसे लड़ाई हो गई, बहस हो गई, उसकी वजह से हाँ, हाथ मार चल रहा है बेसिकली. व्हाट हैपेंस इज, एंड अनलॉफुल असेंबली या रायट में बेसिकली क्या हो गया कि प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, या लोग एक दूसरे को बेसिकली दे आर हर्टिंग एवरीवन.
तो वो सारे केसेस हो गए। बट लिंचिंग क्यों डिफरेंट है? इवन दो जो लिंचिंग वर्ड है, मॉब लिंचिंग, ये आईपीसी में कहीं डिफाइंड नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है इसका, ठीक है। बट इसमें ये होता है कि एक पर्सन को, जो मॉब है मतलब लोग हैं बेसिकली, अब ये भी क्योंकि डिफाइंड नहीं है तो हमें नहीं पता कि कितने लोग मिलके एक मॉब बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे 9 लोग हैं, वी डोंट नो कि 2 लोग मिलके सफिशिएंट होंगे कि 3 लोग होंगे, कि मतलब कितना, व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम, वी डोंट नो। तो मॉब किसको कह सकते हैं? तो मॉब लिंचिंग में, बिकॉज देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन आईपीसी, बट उसमें क्या होता है, उसमें क्लियर कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मॉब लिंचिंग है कि नहीं है? उसमें एक पर्सन या एक इंडिविजुअल या कुछ लिमिटेड चीजें टारगेट होती हैं, यानी कि एक ग्रुप दूसरा एक छोटा ग्रुप भी हो सकता है। बेसिकली देयर इज अ टारगेटेड अटैक, ठीक है, इट्स अ टारगेटेड वायलेंस बाय large group of people, ठीक है। Now, mob lynching is a violation of human dignity to Article 21 of the Constitution, gross infringement of UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Such incident violate the right to equality and prohibition of discrimination. 15 आ गया article, ठीक है। Then, right, lot of fast track courts have also been designated now to to take up matters related to mob lynching, right? And up to July 2019 onwards, July 2019 onwards, Supreme Court ने in one of the judgments basically victim compensation schemes की बात भी करी है, victim compensation schemes, ठीक है, for rehabilitation of, relief and rehabilitation of victims. So relief and rehabilitation of, तो अभी 3 स्टेट्स हैं, 3 कौन से स्टेट्स हैं? एक है मणिपुर, वेस्ट बंगाल, okay, so let's continue. Right, sorry, there was a power cut, so it took time for the Wi-Fi to back up. ठीक है, so we'll continue. हाँ, तो मैं जो बात कर रही थी, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, then you have Rajasthan, then you have Rajasthan and Jharkhand, ठीक है। इन लोगों ने, इन स्टेट्स ने क्या किया है, दी स्टेट्स हैव एक्चुअली इनैक्टेड लॉज अगेंस्ट मॉब लिंचिंग, ठीक है। और क्रिमिनल लॉ, जस्ट फॉर स्टेट्स ने कैसे इनैक्ट किया है, बिकॉज जो क्रिमिनल लॉ डोमेन है, क्रिमिनल लॉज जो हैं, यानी कि आईपीसी, बेसिकली सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी इट कम्स अंडर, right, it criminal laws basically comes under the concurrent list में आते हैं, ठीक है, concurrent list, which is third list in under 7th schedule of the Constitution of India, ठीक है। concurrent list में जो भी subject matters हैं, उस पे both union as well as the state can make laws on those subject matters, right? ठीक है, okay, so we'll move on to another news item now. All right, so ये जो next news item है, it states, for delivery agents government's EV push brings burden of transition, ठीक है। अब ये मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 की बात करता है,
दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी है कि अब to set an ambitious so Delhi government has set an ambitious target of replacing all conventional fuel based 2 3 and 4 wheeler commercial vehicles with electric vehicles within 5 years. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट तो कर दी कि जो भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर या 4 व्हीकल कमर्शियल व्हीकल्स है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स, उनको रिप्लेस किया जाएगा with EVs यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स विद इन 5 years. ठीक है, कमर्शियल व्हीकल्स वो जो कि व्हीकल्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस. ठीक है, नॉट प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल्स नहीं, बट द वंस हु आर विच आर बीइंग यूज्ड. तो जैसे कोई डिलीवरी पर्सन है, ठीक है, तो basically he's using the commercial vehicles. That vehicle you would have seen जो उनके scooters या होते हैं उस पे भी they have certain tags, right? Zomato या Swiggy basically होता है. And but ये जो ट्रांजिशन, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये 5 साल के अंदर अंदर ट्रांजिशन होगा टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. बट ये ट्रांजिशन का बर्डन दिल्ली गवर्नमेंट नहीं उठा रही है. द बर्डन इज बीइंग कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू द पीपल, दोज डिलीवरी पर्सन इटसेल्फ. तो क्या हो रहा है कि कई बहुत सारे ऐसे जो डिलीवरी पर्सनल हैं जिन्होंने अभी अपना लोन लेके, जिन्होंने अभी अभी व्हीकल्स परचेज करी है, राइट, 2 व्हीलर्स और वट एवर द व्हीकल्स दैट दे हैव परचेज, तो उनके ऊपर अब एक बर्डन है कि अभी ऑलरेडी लोन चल रहा है. नाउ वील हैव टू शिफ्ट टू एंड बाय अनदर व्हीकल फॉर दैट विच विल बी एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल. तो ये सारी चीजें, तो ये न्यूज आइटम बेसिकली उस टॉपिक की बात करता है, राइट. न्यूज आइटम इज डिस्कसिंग द बर्डन ऑन द डिलीवरी पर्सनल्स, but we need to understand what is the motor vehicles act. ठीक है, so motor vehicles act ये क्यों important है? बिकॉज टॉर्ट लॉ के, तो जब हम लोग टॉर्ट लॉ पढ़ते हैं तो वो टॉर्ट इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ. ठीक है, बट टॉर्ट लॉ कोडिफाइड नहीं है, बट उसमें जैसे कुछ कुछ एंसिलरी स्टैट्यूट्स हैं. ठीक है, कुछ लॉज हैं जो कि दे फंक्शन ऑन एंड अराउंड टॉर्ट लॉ. ठीक है, टॉर्ट लॉ प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द घूमते हैं. ठीक है, दोज एंसिलरी लॉज. तो उनमें से एक है मोटर व्हीकल्स लॉ. मोटर व्हीकल्स लॉ जो है ये, दिस इज अ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन. ठीक है, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन which sort of, एक तो it works on prevention of you know accidental cases. जो भी accidental cases हैं उनके प्रिवेंशन की बात करता है. और एंड अगर कंट्रोल ऑन, मतलब बेसिकली टॉक्स अबाउट रोड सेफ्टी उससे रिलेटेड, रोड सेफ्टी से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं. ठीक है, बिकॉज रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं. एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट विक्टिम कॉम्पनसेशन. कि ये एक्ट बेसिकली विक्टिम्स को कॉम्पनसेट की, जो लेजिस्लेशन है उसका जो पर्पस है, one of the purposes is also to compensate the victims for any victim compensation or relief has been given for any aggrieved parties, relief for aggrieved parties. ठीक है, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इस लॉ का, मोटर व्हीकल्स लॉ का. ठीक है, अब मोटर व्हीकल्स लॉ इज वन ऑफ द एंसिलरी लॉज. और कौन कौन से लॉज आ जाते हैं जो टॉर्ट से रिलेटेड है? एक आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ. ठीक है, then you will see that competition law is also one of the ancillary laws. Competition law. ठीक है, ऐसे कई सारे इनफैक्ट लॉज हैं, नॉट जस्ट these are just three that are coming in my mind right now. ठीक है, तो मोटर व्हीकल्स लॉ बेसिकली एक सो ये जो लॉ है ये आइडियली इट वाज जब 1914 में पहली बार कॉलोनियल टाइम्स में ये लॉ आया था, बिकॉज उस टाइम व्हीकल्स रोड पे आनी शुरू हो रही थी. ठीक है,
बट धीरे धीरे ऑफ कोर्स जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे नाउ ऑफ कोर्स अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रही है, सो दिस इज आल्सो एन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? तो टेक्नोलॉजी बढ़ती है विद टाइम, ऑल्सो यू नीड टू अपग्रेड योर लॉज। सो अगेन, तो अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए एंड द लेटेस्ट वाज द 2019 अमेंडमेंट टू द मोटर व्हीकल्स एक्ट, ठीक है? अब 2019 अमेंडमेंट, यू नीड टू फर्स्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इससे रिलेटेड ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑन रोड सेफ्टी। ग्लोबल इनिशिएटिव्स तो एक है, देयर इज दिस ब्राजीलिया डेक्लेरेशन, ब्राजीलिया डेक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी, राइट? एंड ये 2015 में साइन हुआ था, 2015 का ये डेक्लेरेशन है। एंड दिस इज द थर्ड ग्लोबल इनिशिएटिव, मतलब उससे पहले दो और हो चुके हैं, बट ये लेटेस्ट है, तो ये जान सकते हैं। एंड through Brasilia, countries plan to achieve sustainable development goal। जब हमने SDGs की बात करी थी, 17 जो SDGs की बात करी थी, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, उनके कुछ सब गोल्स या सब टारगेट्स भी हैं। One of them is the 3.6, so sustainable development goal 3.6, which plans to halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents by 2030, ठीक है? ये 2015 में इंटरनेशनल इनिशिएटिव हुआ था, उसके बाद 2019 में हमारे जो लॉ था, राइट, इट हैड बिकम रियली कंप्लेसेंट, तो उसमें भी अमेंडमेंट्स लाए गए, बिकॉज लुकिंग एट द न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड द अपग्रेडेशन दैट वी रिक्वायर्ड इन लॉ, ठीक है? एंड यूनाइटेड नेशंस में, अब ये कुछ मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ, ये जीके और लीगल जीके के स्टैटिक पॉइंट्स हैं, तो यू कैन रिमेंबर दोस, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड 2011 to 2020, 2011 से 2020 as the decade for action for road safety, मतलब it should be a decade of action for road safety, ये है 2011-2020, this was declared by the United Nations. Now you can also google कि अभी कौन सा decade चल रहा है according to the United Nations, what they have declared, so that also you can google, right? And it is celebrated every 2 years, the 5th edition of UN Global Road Week, ठीक है? So and there are other programs also like International Road Assessment Program, IRAP. इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? इंडिया टॉक्स अबाउट द 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी, 4 E's। तो अभी जो नई जो अमेंडमेंट्स आए हैं, टॉक्स अबाउट 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है? दिस इज द एजेंसी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है? there is no comma here, sorry for that. Ministry of Road Transport and Highways is the main agency, has formulated a multi-pronged strategy on 4 E's, यानी कि 4E क्या? एजुकेशन, so रोड सेफ्टी से रिलेटेड एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। आई मीन आप लोगों ने देखा होगा, हेलमेट लगाओ और बहुत सारी चीजें, टू कैरी योर लाइसेंस,
बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट विद टाइम देती रहती है, पॉलिसीज इनिशिएटिव्स लाती रहती है कि लोगों को एजुकेट किया जा सके अबाउट रोड सेफ्टी, राइट. Engineering. So first is education, second is engineering, second E of road safety, engineering. कई बार ऐसा भी होता है, लाइक यूपी गवर्नमेंट ने अभी लास्ट ईयर बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि रोड सेफ्टी कैसे और बढ़ाई जाए. उसका उसमें सिर्फ व्हीकल्स या व्हीकल ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रोड्स कैसी हैं वो भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया प्ले करता है. ठीक है, रोड सेफ्टी को इंश्योर करने में रोड कैसी बनी है, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल इन इंश्योरिंग रोड सेफ्टी. तो रोड्स पे भी कैसे बम्प्स होने चाहिए, जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, उसके लिए भी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस है. ठीक है, राइट. एंड एनफोर्समेंट, then enforcement on of the road safety laws एंड इमरजेंसी केयर. कुछ भी इमरजेंसी होती है तो मतलब कोई भी एकदम से एक्सीडेंट होता है तो देयर हैज टू बी एन इमरजेंसी केयर अवेलेबल. तो एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं या कुछ जो है चीजें हैं जो कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के 2019 अमेंडमेंट में ये सब इनकॉर्पोरेट की गई हैं. प्रोविजंस रिलेटेड टू सच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड. और एक कमिटी है जस्टिस KS राधा कृष्णन कमिटी. ठीक है, सो दिस बेसिकली वाज सेट अप, ये जो कमिटी वाज सेट अप इन 2014, 2014 आई थी. और इसी ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे 2019 अमेंडमेंट के लिए, इस कमिटी ने जो पैनल सेटअप हुआ था उसने रिकमेंडेशंस दिए थे कि क्या हम एडवांसमेंट जो हो रही है उसके साथ साथ हम कैसे लॉ को अमेंड कर सकते हैं, क्या चीजें हम और ऐड कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं लॉ में, जिसमें कि लॉ और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अच्छा हो जाए, राइट. सो एंड मोटर व्हीकल्स एक्ट के कुछ फीचर्स जान लेते हैं. सो उसमें क्या हुआ है, ये जो 2019 में अमेंडमेंट आया है तो जो भी ऑफेंसेस थे रोड के तो उनपे जो पेनल्टीज थी, पहले जो लॉ था उसमें बहुत कम पेनल्टी थी. ठीक है, कम पेनल्टी होगी, लाइक इफ यू हैव लाइक 50 रुपीज एज अ पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग और समथिंग, तो वो तो आज के टाइम में विद टाइम बिकॉज प्राइस द वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो चेंजेस, सो तो उसको ऑब्वियसली हाइक किया गया है नाउ. ऑफ कोर्स एक एंड इट हैज बीन हाइक टू सच एन एक्सटेंट दैट पीपल शुड एटलीस्ट हैव सम फियर कि हाँ ठीक है हमें रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, रेड लाइट पे वेट करना है. तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि लोग फॉलो करें, इसलिए उसको जो पेनल्टीज है उनका जो अमाउंट है उसको आज के टाइम के अप्रोप्रिएशन के उसमें हाइक किया गया है. ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक वायलेशन इट हाइक्स द पेनल्टीज फॉर ट्रैफिक वायलेशन. डिफेक्टिव व्हीकल्स, लाइक डिफेक्टिव व्हीकल्स, आपके लाइट कोई नहीं काम कर रही है या मिरर, जो साइड मिरर्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, सो ऑल ऑफ दिस, इफ द व्हीकल इज डिफेक्टेड, बिकॉज डिफेक्टिव व्हीकल से ड्राइव करना भी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर, तो ओनर विल बी लायबल. ठीक है, एंड जुवेनाइल ड्राइविंग, तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट लाइसेंस इज ऑल्सो एन ऑफेंस, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, एंड ऑल्सो देन जुवेनाइल ड्राइविंग, बहुत सारे बच्चे भी आप निकल जाते हैं, 15-16 साल के यंग लड़के लड़कियां, तो वो भी निकल जाते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल्सो an offense, so that has been curtailed. It provides for motor vehicle accident fund. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड की बात करती है ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन अमेंडमेंट, एंड विच वुड प्रोवाइड कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल रोड यूजर्स. इसमें क्या हुआ कि 2019 में जो अमेंडमेंट आया उससे पहले व्हीकल इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं था, 2019 के आने के बाद मैंडेटरी कर दिया गया है. कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल रोड यूजर्स इन इंडिया फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स. सो एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी कोई वायलेशन होता है तो भी आपके पास एक कवर होना चाहिए. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, so the 2019 amendment also provides for national road safety board. ठीक है, to be created by central government through notification. so national road safety board की बात करता है. and the act also provides for protection of good samaritans. good samaritans वो लोग जो अपना like वो जो अच्छे भाव से या अच्छे इंटेंशन से
लोगों की हेल्प करते हैं इन केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, तो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है। कोई किसी को रोड एक्सीडेंट हुआ है और कोई किसी को हॉस्पिटल ले जा रहा है, तो पुलिस उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करने लगे या उन्हीं से पूछताछ करने लगे, तो दिस क्रिएट्स अ फियर इन द माइंड ऑफ द पब्लिक ना। तो जो लोग हेल्प करना चाहते हैं उस डर की वजह से वो भी हेल्प नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये 2019 अमेंडमेंट उसी लिए लाया गया कि जो अच्छे लोग हैं कम से कम वो हेल्प कर पाए, इंसानियत जगी रहे लोगों में, ठीक है। आ, तो ये लॉ ने प्रोवाइड किया है। लॉ जब ये इंश्योर करता है कि हाँ सोसाइटी परफेक्टली काम कर सकती है या चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो इट एक्चुअली इज अ गुड थिंग। ओके, अच्छा, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूज आइटम है, दिस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ब्लॉक विल ओनली टाइटन द लीश। इसमें द ऑथर of this article is saying, in November 2019, India walked out from the trade pact called Regional Comprehensive Economic Partnership, that is RCEP, RCEP or RCEP, and involving China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, and 10 state association, and the other was ASEAN, the 10 state association grouping. Fast forward to 2023, now India, along with many of the same countries, but with China replaced by United States, is getting into the US driven Indo-Pacific Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. This is IPEF, IPEF. The obvious questions are, what has changed and how are the two economic partnership frameworks different? तो इसमें दोनों को कंपेयर किया गया है कि आरसेप में क्या चीज अलग थी, जो मतलब क्या पॉइंट, क्या चीजें हो गई थी कि इंडिया ने आरसेप को छोड़ा और फिर आईपीएफ को ज्वाइन कर लिया। उसमें चाइना को छोड़ के बाकी सब कॉमन है, मतलब चाइना, there's okay, so very little difference is there, but what are the reasons? So we'll see. तो पहले समझेंगे आरसेप क्या है। आरसेप, what is RCEF, RCEP? RCEP is a regional comprehensive economic partnership, ठीक है। This was signed by 15 countries, right? And India was part of the negotiations under RCEP for 9 years till it pulled out in November 2019. तो November 2019 में इंडिया ने छोड़ दिया RCEP, जो सिग्नेटरी था उसमें, और इंडिया left it, stating that inadequate safeguards and lowering of customs duty will adversely impact its manufacturing, agriculture and dairy sector. So India, जो भी वहाँ पे discussions हो रहे थे, there were some inadequate safeguards, lowering of customs duties, and they were basically adversely impacting manufacturing, India के जो manufacturing sector है वो, and the agriculture and dairy sector, ठीक है। अब you need to understand कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है, ठीक है, वो बहुत चेंज हो गया है पहले से, ठीक है। सो टुडे इंडिया goes forward with India's interests first. So India's interest for India should ideally come first, and which is what is happening now, right? And that's why बहुत सारी चीजें, we talk about आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा जब तक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग ना हो, जब तक सेल्फ डिपेंडेंसी ना आए, यानी कि जो सारी चीजें प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, उस पे जोर देना बहुत जरूरी। सो दैट इज व्हाट, तो अगर कोई भी ग्रुपिंग ऐसी होगी, कोई भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग जहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, या जहाँ पे भी the objectives that India is following, the targets that India has, तो अगर उसको negatively affect करेगी कोई grouping, then of course India will leave that grouping, ठीक है। So that was unfavorable balance of trade. So this is sort of like unfavorable balance of trade, and this happens also because China is considered one of the most, China and some of the Southeast Asian countries are considered the manufacturing hubs of the world,
ठीक है. India was never has never been considered manufacturing hub before. अब India बन रहा है manufacturing hub of the world, right? It is one of the countries that is developing into a manufacturing hub of the world and is competing with China, at least trying to. अभी we are moving towards into that direction. ठीक है. तो unfavorable balance of trade. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स देयर इज चाइनीज एंगल. सो अगर चाइना का इंटरेस्ट ब्लॉक हो रहा है तो चाइना किसी को और आगे बढ़ने नहीं देगा. एनीवे, सो व्हाट यू नीड टू नो दिस फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ पॉइंट ऑफ व्यू. एक तो आरसेप क्या है एंड व्हाट इज आसियान. व्हाट इज आसियान? आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन and just to clarify, the point of views that I am mentioning, they are my own point of view, and I'm solely representing myself, and I'll be solely responsible for it, for whatever point of view. This is what I am inferring out of what I'm reading. Okay, right. Association of Southeast Asian Nations. And this is a regional organization which was established to promote political and social stability amid rising tensions among the Asia Pacific's post-colonial states. ठीक है. And मोटो है आसियान का वन विजन वन आइडेंटिटी, वन विजन वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी. ठीक है. एंड आसियान डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट आसियान डे ऑन 8th of August. ठीक है. All right, even in ASEAN, you see a lot of the favor is given to China's initiatives and not India's initiatives. There have been several problems. Okay, now we'll talk about what is IPEF. IPEF. Okay, this is Indo-Pacific. This is US driven. Okay, I'm quoting what the author here is saying. This is Indo-Pacific Economic Framework, IPEF. ठीक है. Indo-Pacific Economic Framework. So Ministry of Commerce and Industry addressed, so this was Indo-Pacific Economic Framework, wherein India decided to stay away from fair and resilient trade pillar. तो इंडिया कुछ चीजें हैं जिस पे इंडिया ने अग्री किया है, यानी कि some points जो कि cater करता है. It caters to supply chains, making the supply chains more resilient. ठीक है. And of course curbing dependency on China. ठीक है. जो चाइना पे पहले सब डिपेंडेंट थे, अब वो डिपेंडेंसी हटा रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड. दे हैव रियलाइज्ड व्हाट चाइना इज अप टू. ओके, सो टैक्स एंड एंटी करप्शन इज द सेकंड दिस थिंग, एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन and clean energy. This is of course from environment point of view. Acha. This is US-led initiative that aims to strengthen economic partnership among participating countries to enhance resilience, sustainability, inclusiveness, economic growth, fairness, and competitiveness in the Indo-Pacific region. Right? And the IPF was launched in 2021. तो 2021 में इसको launch किया गया था. And so IPF is not a free trade agreement. हमने पिछले sessions में बात की थी what is a free trade agreement. So IPF is not a free trade agreement. It only allows the members to negotiate the parts they want. ठीक है. So it is not a FTA, but it allows the members to negotiate अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट. तो क्या होता है कि एक ग्रुपिंग बना दी है, उस ग्रुपिंग के अंदर दे कैन हैव सब ग्रुपिंग्स, यानी कि किसी को बायलैटरल उसमें जाना है, किसी को मल्टीलैटरल, टॉपिक स्पेसिफिक यानी कि इशू स्पेसिफिक, दे कैन हैव देयर ओन स्मॉलर
this thing, just which can suit their interest, whatever that. So supply chain resilience, clean energy, decarbonization and infrastructure, taxation and anti-corruption, fair and resilient trade, ये सारी चीजें this particular IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, talks about. ठीक है, so I hope this is clear. We'll move on to another news item now. All right. Any doubts or any question, you can ask me in the comment section below. Okay, this is the last news item for today. The nutritional value of millets. ठीक है. अब the food and agricultural organizations, पहले तो international law के point of view से हमको ये समझना होगा, because FAO has been mentioned here. FAO stands for Food and Agricultural Organization. ठीक है. This is a organization, this is a United Nations specialized agency. तो United Nations की हमने बात करी है, बहुत सारी specialized agencies हैं, उनमें से एक है FAO. ठीक है. This leads international efforts. It leads international efforts to defeat hunger. Hunger, this is also SDG 1, यानी कि Sustainable Development Goal 1, which talks about fighting against hunger and poverty. ठीक है, so SDG 1. I hope I am right. If I am wrong, then please correct me in the comments. Okay, so SDG 1. Then World Food Day. World Food Day कब celebrate होता है? World Food Day is celebrated on 16th October. 16th October को क्यों? Because 16th October is the day on which FAO was found. तो 16 October 1945 में इस organization का गठन हुआ था, यानी कि this organization was established in 1945 and 16th October को, so that's why World Food Day is celebrated on 16th October. It is one of the UN food aid organizations based in Rome, Italy. तो इसका जो headquarter है वो है Rome, Italy. ठीक है. It is sister body of World Food Program and International Fund for Agricultural Development. बहुत सारे initiatives लिए हैं, right? So we won't go into that. Whatever is important for you, only that we will discuss. अच्छा, अब हम इस पे आते हैं article पे, news item पे. तो international, so UN ने basically year 2023, ये तो आप लोगों को पता ही होगा because ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, पिछले साल की न्यूज़ है, but since it is in this news item also, I will now talk about it. So 2023 जो साल है, this has been declared as the International Year of Millets. So the year 2023 has been declared as the International Year of Millets. ठीक है? All right. अच्छा. To create awareness, and why it has been done so? To create awareness and a sense of participation in the country around the ancient and forgotten, and create awareness and participation in countries and in ancient and forgotten, in countries around ancient and forgotten. Ancient and forgotten, golden grain, तो इसको golden grain भी बोला जाता है. अच्छा, मिलेट्स को इम्पोर्टेंस इतनी क्यों दी जा रही है, ये जानना बहुत जरूरी है. मिलेट्स में ऐसा क्या अलग है जो हम लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? तो जस्ट फ्यू पॉइंटर्स आई वांट यू ऑल टू नो. ठीक है. मिलेट्स बेसिकली दे कंज्यूम लेस, जब भी इरिगेशन होता है ना, सो दे कंज्यूम लेस वाटर फॉर इरिगेशन. तो अगर किसी
पर्टिकुलर फूड आइटम को आपको ग्रो करने में, लेट्स से वीट और राइस सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाले ग्रेन्स हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर वीट और राइस को अगर आप 100 यूनिट्स पानी प्रोवाइड कर रहे हो, तो मिलेट्स में 30 या 30 से कम यूनिट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। दैट्स इट, हाइपोथेटिकल आई एम गिविंग यू, दिस इज नॉट द फिगर्स आई एम ओके। तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि उसमें इतना रिडक्शन पॉसिबल है, यानी कि इरिगेशन में वाटर कम कंज्यूम करता है, कम पानी में उगाया जा सकता है। तो जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है, जहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम है, वहां के लिए भी मिलेट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वाटर कम पानी में उगाया जा सकता है, राइट। उसमें लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत पैक्ड होते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यू विल सी प्रोटीन, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड मिलेट कोई एक ग्रेन नहीं है, मिलेट इज अ ग्रुप ऑफ ग्रेन्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ग्रेन्स, ठीक है। हर ग्रेन की कोई ना कोई वो है। सो इंडिया में इवेंट्स हैव बीन लॉन्च्ड लाइक इंडियाज वेल्थ, मिलेट्स फॉर हेल्थ, मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, माइटी मिलेट्स क्विज, right? So India's proposal, India had in fact proposed to the FAO, इसीलिए international year has been declared, and this was adopted by UN resolution. Okay, the objective is to awareness of contribution of millet to food security. अभी food security की भी बात हो रही है, right? Because lot of area soil deplete हो रहा है, there is depletion of soil that is happening, there is degradation of land that is taking place, उसी उसकी वजह से जो food security है, the global food security is being impacted, and that's why we need to switch to another alternatives, yeah, better alternatives. So millet is a better alternative for food security and nutrition. मतलब ये साइंटिस्ट बोलते हैं ये चीज कि अगर आप 2020, अगर आप 2000 लेट्स से सॉरी 1920 में अगर आप एक ऑरेंज खा रहे थे, तो जो आपको न्यूट्रिएंट्स 1920 में एक संतरे से, एक ऑरेंज खाने से मिल रहे थे, आज अगर आप उतना अगर आपको न्यूट्रिएंट चाहिए होगा ना, उतने विटामिन सी या उतने न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो अगर चाहिए होंगे, तो उसके लिए आपको 8 से 10 संतरे खाने पड़ेंगे उतना न्यूट्रिशन लेने के लिए। इतना न्यूट्रिशन में अंतर आ गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस आ गया है इन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड वॉट एवर दैट वी आर कंज्यूमिंग, जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं जो हम खा रहे हैं, ठीक है, फूड एडिबल कमोडिटीज। तो उसमें इतना यू मस्ट हैव हर्ड ना, आपके जो हमारे जैसे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं पुरानी जनरेशन के, वो भी बोलते हैं कि आज के खाने में स्वाद नहीं आ रहा, आज के खाने में वो स्वाद नहीं है। तो वो स्वाद ही नहीं गया है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत डिप्लीट हो गई है, ठीक है। तो वो और उसका रीजन वही है, बिकॉज सॉइल डिप्लीट हुआ है, सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट, तो इस वजह से जो न्यूट्रिशन डिप्लीशन है, तो मिलेट उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, राइट। सो then it inspires stakeholders to improve sustainable production and quality of millets, focus on enhanced investment and research and development, and extension services to achieve the aims, right. So millet is basically a collective term referring to a number of small seeded annual grasses that are cultivated as grain crops primarily on marginal lands in dry areas in temperate subtropical or tropical regions, राइट। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, रागी सोरगम और जवार, जवार हो गया, ठीक है, बाजरा, रागी बाजरा जवार। अच्छा, इनकी जो इम्पोर्टेंस थी हम लोगों ने सबने पढ़ा है, राइट, जो मतलब पुराने टाइम में यू नो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो ये रागी जवार बाजरा, बिकॉज आई वाज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, तो हमको ये पढ़ाया जाता था कि दिस इज अ फूड फॉर पुअर, ठीक है। तो जो गरीब लोग हैं वो ये खाते हैं, जो अमीर लोग हैं, बेसिकली व्हाट इट वाज मार्केटेड। एक टाइम था जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन से व्हीट और राइस का प्रोडक्शन को बहुत इन्हांसमेंट मिली, ठीक है, उसको इन्हांसमेंट मिली, एंड उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, बिकॉज जो मिलेट्स था, मिलेट्स के ग्रोथ के लिए उनको इतना प्रमोट नहीं किया गया, एंड मिलेट्स वर मार्केटेड एज द फूड फॉर द पुअर, and the wheat and the rice were being marketed as the food for the uplifted people. So that's one thing. So that's why millets have been had millets then became the neglected food items. So
इसलिए कि वो वापस से उनको हम वापस रिकग्निशन प्रोवाइड करें, और जो उनकी क्वालिटीज हैं, दे आर मच much more nutritious than wheat and rice. In fact, wheat and rice, we cannot even compare wheat and rice with millets. All right. So and India is the largest producer of millet in the world. Largest producer of millet in the world. Right. And they're nutritionally superior. Then they are gluten free. आज के टाइम में gluten free बहुत सारी चीजें gluten free promote हो रही हैं, right? So that's, they are gluten free. They are low on glycemic index, right? They are super crop at growing. They don't need much water. They are super crops. They are resilient to climate change. अभी तो देखो इतना climate change हो रहा है, फसल फार्मर्स की क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स की वजह से बर्बाद हो जाती है, जहां बारिश होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, millets are resilient to climate change. Millets are photo insensitive. They do not require any specific photo period to flower. They are दे कैन इवन ग्रो ऑन पुअर सॉइल. तो मतलब आपको सॉइल भी मतलब सॉइल में अगर कम न्यूट्रिशन है, कम ऑर्गेनिक सॉइल है, उसमें भी मिलेट्स ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. दे कंज्यूम लेस वाटर. दे आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग अंडर ड्राउट कंडीशंस, right, and under non irrigated conditions, and they even require very low rainfall regimes. तो बहुत कम rainfall में भी they can grow. They have low carbon and water footprint. अच्छा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है तो कार्बन फुटप्रिंट की भी बात हो रही है कि कार्बन कितना रिलीज हो रहा है. ठीक है. तो मिलेट्स, दे डू नॉट रिलीज कार्बन फुटप्रिंट. दे हैव वेरी लो कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट. राइस प्लांट्स नीड 3 times मोर वाटर. तो अगर हम चावल की बात करें, चावल को 3 times मोर वाटर लगता है. एंड यू नो वीट ऑल्सो नीड्स मोर वाटर टू ग्रो, मच मोर. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन. ठीक है. मिनिमम एंड इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इंक्रीज किया है. MSP. ठीक है. The government has hiked the minimum support price of millets, which came as a big price incentive for farmers. To provide a steady market for the produce, the government has induced or included millets in the public distribution system. The government has introduced provision of seed kits and inputs to farmers, building value chains through farmer producer organizations and supporting the marketability of millets. ठीक है. तो ये है आज के न्यूज आइटम्स. ये हो गया एक जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आई होप आपको अच्छे से डिलीवर कर दिए हैं. एंड आई वुड ऑल्सो लव सम फीडबैक फ्रॉम योर एंड कि मैं अपनी क्लासेस को कैसे और इम्प्रूव कर सकूं, जिसमें कि आपकी मैं ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊं. राइट. आई वुड लव सम फीडबैक ऑन हाउ आई कैन इम्प्रोवाइज माई वे ऑफ टीचिंग और माई क्लासेस, so that I can help you in a much more efficient way. Okay, so let me know in the comment section below. I would love to see some comments. And so these were today the highlights and the news for today. So thank you very much for attending, and you can join my Telegram channel for regular updates and the Hindu newspaper PDF. So thank you all for attending.